कुछ और स्टॉक्स की हम बात करेंगे और स्पेशली कल आए नतीजों की बात होगी, जहां पर फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज हाल ही की लिस्टेड एंटिटी है। ये नतीजे आ चुके हैं, मजबूत परफॉर्मेंस रहा है। कंपनी की ब्याज आय 31% बढ़ी, 254 करोड़ पर आई। मुनाफा अगर आप गौर करेंगे तो 28% बढ़कर आया है। 65 करोड़ कंपनी ने डिलीवर किया है। एसेट क्वालिटी में हल्का सा सुधार देखा गया है। ज्यादा डिटेल्स लेते हैं कंपनी के सीईओ अनिल कोथुरी से। अनिल जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक पहले तो मुझे अंदाजा दे सके, नंबर्स अच्छे हैं लेकिन किस तरह का डिसबर्समेंट रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, स्पेशली गोल्ड लोन्स, बिजनेस लोन्स, अगर वो ब्रेकअप हमारे साथ शेयर कर सके। हाँ जी, in the quarter gone by, we have disbursed 3,344 crore rupees, of which roughly 2,200 is gold loans and the remaining is installment loans, comprising mortgage loans and unsecured loans. Now, this is a 24% increase over the same quarter previous year. So the disbursement momentum is strong, and that's because we have 600 branches and over 4,000 employees in these branches. So disbursement momentum continues to be strong. ये बरकरार रहेगी रफ्तार जो it's nearly 23%. Will you be able to sustain it at this rate? Yes, disbursements will continue to grow. इसका कारण ये है कि lots of our branches are new. इस साल में we've opened about 50 branches selling small mortgage loans. पिछले साल में we opened 50 branches for gold loans. So 100 branches are less than 2 years old. So they are yet to reach full maturity. So for this reason, I believe that the momentum in disbursals will continue. Also, just market में हम हैं, which is to serve the small self-employed customer. That segment is underserved. इनको लोन मिलना बड़ा मुश्किल है. So there's a large opportunity and which we hope to cater to. Okay, sir, I'd like to understand, क्योंकि आपके mortgage side of the business भी थोड़ा सा grow हुआ है, इसका रफ क्या असर yields पर पड़ता है? कैसे देख रहे हैं आप जैसे आप इस business को scale करेंगे? हाँ जी, हमारा मेन प्रोडक्ट है वो स्मॉल मॉर्गेज होता है. वी लेंड टू स्मॉल बिजनेसमैन जिनका इनकम प्रूफ नहीं होता है. So the task is to visit their premises, assess their income and lend on that basis. Okay. Now, ऐसे करने वाले बहुत कम हैं. So lots of people require documents for you to lend to them. जी. So this small mortgage business is only about 3% of the overall industry. So it is going to grow and grow significantly. Okay. Now, the behavioral tenure of these loans is also 8 years. So which is why they stay on the book longer and they are more profitable. So that's the dynamic of the small mortgage business, and it will continue to dominate the portfolio in that the proportion of small mortgage will keep increasing quarter on quarter. I want to also understand, Mr. Kothuri, ये इस समय कंस्ट्रिंग आपने कहा है एक अच्छा पिकअप देखने को मिला है, लेकिन आई एम श्योर आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बढ़े होंगे जब आरबीआई ने दरें बढ़ाई. ऑफ कोर्स नाउ देयर इज बीन अ स्टेबिलिटी इन द रेट साइकिल, लेकिन कितना ये प्रेशर आया है कॉस्ट ऑफ फंड्स का बुक्स पर, इफ एट ऑल? सो आरबीआई ने जो सर्कुलर रिलीज किया है, दैट वाज समटाइम आई थिंक इन द 3rd week of November. Okay. And after that, we've not borrowed because we came up with our IPO and we got listed on November 30th. So, Right. 600 crore के funds हमें आए हैं. We also pursue an off-book strategy. We've sold about 450 crore rupees of portfolio, done co-lending to the extent of 170 crores in the quarter gone by. So, which is why we haven't seen the impact of any of this yet. Also, in the first week of January, we've received 2 rating actions. One is a rating upgrade from CARE. So we're rated AA plus. Now in December 22, we were rated AA minus. So AA minus say we moved to AA, and in about 13 months, we moved to AA plus. So it's a kind of double increase, a two-notch increase over 14 months. Similarly, CRISIL has rated us AA positive. Okay. So these two are positive affirmations of our standing and credibility, and which we hope will defray the impact of the RBI circular as and when it happens.
गोइंग फॉरवर्ड मैं आपसे एक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहूंगी, आप कितना AUM टारगेट कर रहे हैं, क्या आउटलुक रहेगा, हाउ डू यू एनविजन योरसेल्फ, हाउ डू यू एनविजन द FY24 क्लोज, यू हैव अनदर क्वार्टर टू गो, तो किस तरह की ग्रोथ रफली बिजनेस में देखने को मिल सकती है? So हमारा AUM growth has been 34% over the same quarter last year, and I believe that the end of the year will see roughly the same kind of growth. ये last quarter जो होता है उसमें disbursal ज़्यादा होता है, so maintaining that kind of momentum is not a challenge. So year after year, we believe that we can compound AUM at about 25%, and that's the guidance, and we'll try and top that. अनिल जी, ये जो स्मॉल मॉर्गेज लोन्स है उसमें रीपेमेंट की सिचुएशन क्या है, कुछ इम्पैक्ट एसेट क्वालिटी पर, उसके लिए क्या कुछ प्रोविजन करना पड़ता है आप लोगों को? नहीं, ये स्मॉल बोरोवर जो होता है, इट इज जस्ट दैट ही इज अंडरसर्व्ड, सो ये बैंकिंग लेंडिंग ये सब नए चीजें होते हैं, but it is not as if they don't have incomes or that their repayment behavior is poor. Okay? On the other hand, smaller borrowers tend to have multiple sources of income because these tend to be joint families and there is more than one source of income. Okay? So in some ways, they are more de-risked than the normal large borrowers. But having said that, banking habits are not yet established. That's why check bounce hota hai, so collect karna padta hai. But on an overall basis, okay, on a risk-adjusted basis, it is much more profitable than the large mortgage business. अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द फिस्कल. थैंक यू वेरी मच. तो ये फेड बैंक फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर स्टॉक कंपनी ने आउटलुक मजबूत दिया है, ग्रोथ देखने को मिल रहा है, शायद जो रन रेट डिसबर्समेंट का रहा है 23-24% वो बरकरार रहेगा. स्टॉक आज 140 के आसपास कारोबार करता हुआ. चलिए लेंगे एक छोटा ब्रेक के बाद एक स्टॉक और मेरे ख्याल में हमारे जानकार जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.